This chapter is about sales and circular letters. Briefly, ingenuity is the mother of persuasion. Persuasion से मुराद है किसी को कायल करना, persuade करना, किसी को किसी काम की तरफ मबजूल करना, उसको उसकी तरफ उकसाना, persuade करना. Persuasion होता है कि अपनी गुफ्तगू के जरिए किसी दूसरे को कन्विंस कर लेना. Persuade करना, ये word है basically. Persuade is a verb and persuasion is a noun that is actually constituted to this word. Ingenuity होती है newness, creativity, किसी चीज में नयापन लेके आना है. This is called ingenuity. Ingenuity gap usually exist करता होता है research के अंदर. कि research हमेशा नए area के अंदर की जाती है. Ingenuity is bringing forth something which is new. Ingenuity is the mother of persuasion. अगर आपने किसी को कायल करना है तो उसमें आपको नई चीज लेके आनी है. If you don't bring something new and repeat the old ways and orthodoxy, the persuasion will be worst affected due to that. So in order to do that, you have to bring something new. अगर आप मार्केट में भी कुछ चीज लेके आ रहे हैं तो आपको ingenuity लानी है. If you bring or if you repeat the things as you have seen in the market, there are scant chances that your things will be sold or your idea will be accepted wholesale. उसको उसकी reception वैसी नहीं मिलेगी जैसी एक नए idea को मिलती है. For example, हमने ingenuity अगर देखी है तो scientific inventions हमेशा ingenious हुआ करती है. For example, latest the best form of ingenuity we have seen that has actually altered our lives is internet, जो कि मेरा ख्याल है 1980s में शायद आया है और ये global world wide web के जरिए ये every household is in access to global things. और ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जिसको हम कहते हैं. तो इससे आके रेवोल्यूशन डाल दिया. इससे पहले मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है खतूत हुआ करते थे या और हुआ करते थे. तो इसी तरह इसको आप एक इंजीनियस किस्म की का आइडिया कह सकते हैं. सिमिलरली स्मार्टफोन्स, एविएशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, gasoline engines, and etc., and various other ideas which are new, which have not been thought in previous decades or centuries. Chapter objectives. To develop the skills of writing an effective sales letter by providing detailed guidance on how to arrest the potential buyer's attention and to introduce in him an irresistible desire to buy the product. जब आपने किसी बायर को हरास करना है, अट्रैक्ट करना है, उसकी जेब में से पैसे निकलवाने हैं वो चीज खरीदने के लिए, आपको सबसे ज्यादा चीज है to develop the skills of writing an effective sales letter. You have to develop an effective sales letter by providing detailed guidance on how to arrest the potential buyer's attention and to introduce in him an irresistible desire to buy the product. इसीलिए business में entrepreneurial skills जो हैं उनको या entrepreneurial skills को बहुत ज़्यादा promote किया जाता है. Because an entrepreneur is someone who is a pioneer in certain field, who brings a newer idea. The state of Israel, which is an illegitimate state according to many states in the Middle East and across the world, is known for its entrepreneurs. वहाँ पे military service, compulsory military service भी है, and most of the people who retire from army over there, they are known for their startup businesses. और वो startup businesses वो हैं जो कि बिल्कुल नए ideas पे मुबनी हैं. कोई rooftop farming को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, कोई सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रो कर रहा है. एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स. सो देयर इज अ वेरी फेमस बुक नेम्ड द स्टार्टअप नेशन, और उसमें इसराइल की स्टेट के बारे में लिखा गया है कि उसकी ब्रूटैलिटीज और उसकी मिलिट्री की जो ब्रूटैलिटीज उनको एक साइड पे रखें, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि द नेशन इज नोन फॉर इट्स स्टार्टअप्स. हर इंडिविजुअल जो है वो नए आइडियाज लाता है और मार्केट को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है. तो बिजनेस में भी न्यूअर आइडियाज, क्रिएटिव और इंजेन्युइटी वाले आइडियाज जो हैं उनको बहुत ज्यादा स्कोप है. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड.
आप अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भी है, if you bring something new or some new idea, you have a scope. और अगर आप repetitive manners के ऊपर grow कर रहे हैं तो there are scant chances that you will survive in the market. आप बिजनेस की वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि माजी में हमारा एशियाटिक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था जिसमें छोटे दुकानदार, छोटी शॉप्स, छोटे रिपेयर्स और छोटे बिजनेसमैन ज्यादा हुआ करते थे. लेकिन since the arrival of these global Walmarts and etc. and those malls, the old businessmen have somehow lost the game and they have missed the bus. Now, big businessmen have actually monopolized the market. They are actually attracting most of the buyers, and people rarely go to those old typical small markets or small shops anymore. So ये एक ingenious idea था जो कि west से आया, and now we are copying it as well. Hence, the business world relies a lot upon this ingenuity thing. Ingenuity, जिसमें creativity है, नए idea, future को predict करना और उसके मुताबिक invest करना और future को predict करते हुए अपनी commodity या product को introduce करवाना. So these are the things that are actually requiring newer ideas, thinking out of the box, what you call. And for that, you need to have a very good communication skill as well. If you want to write a good sales letter and circular letter, you need to have good communication skill, good skill over language, how to attract attention of the potential buyers. The sales letter is one of the important instruments of sales promotion, despite unprecedented advancements in advertising through the print and electronic media. To be effective, it should catch the attention of the reader, excite his interest and curiosity, and induce him to buy the goods or services offered. It should begin with an attention-catching device and end with an inducement for action. शुरू में attention-catching device use की जाएगी and end with an inducement for action, और आखिर में उसको attract किया जाएगा, आपने ये काम करना है, आपने ये चीज लेनी और देर न करें. The main body of the letter should provide convincing arguments and evidence to vouch for the quality of the product. There are sundry ways of catching the attention. Some of these are making a starting statement, special appeals or offers, relating an anecdote or a story, providing evidence, and asking rhetorical questions. The main body should draw attention to central features and facilities offered, such as trial offers, guarantees, free samples, etc. The last part of the letter should clinch the issue by prompting action with inducements such as limited time, quantity offers, special bargain offer, convenience in ordering, or prices. This is a limited edition होता है कि ये limited edition है, तो वो limited edition सुन के लोग फौरन खरीद लिया करते हैं. Prices and extra times or extra items offered. A circular letter is written to transmit a message to a number of persons simultaneously, as the message does not need to be created again and again. It saves time, money, and effort. Its structure is the same as that of the other business letters, and the style persuasive or expository. Last time भी हम कर चुके थे, लेकिन I am deliberately doing it once more. इसके main चीजें 143 पे हम आएंगे. इसकी main चीजें catching the reader's attention, arousing his desire to buy, convincing him that your product or service is the best in the market and that he needs it immediately, motivating him to act quickly. तो ये letters जो हैं, sales letters जो हैं, ये basically जो buyer है उसको attract करने के लिए होता है. Writing a sales letter, I move down to page 143 और उसके bottom पे आएंगे, writing a sales letter. Now let us examine in detail how to write the three main parts of a sales letter, namely the introductory paragraph, the body, and the concluding paragraph. ये तीन parts हैं, the main introductory paragraph, the body, and the concluding paragraph. Let's see technically what should be there in the introductory paragraph. All of us like to receive letters, and we go through at least the first few lines of each one of them. Your letter must take advantage of this inherent trait of human nature. In many cases, the opening sentence is the only sentence that is read, and hence this sentence has a vital role to play. It must arrest the reader's attention and immediately appeal to his interests, feelings, vanity, or social sense. The lines that follow it should sustain his interest and invite him to go through it. In fact, how
You write the first few lines will largely determine whether your entire letter will be read or thrown unceremoniously into the waste basket. कि आपका लेटर की पहली लाइन बताएगी कि इसको पूरा पढ़ना चाहिए या पकड़ के उसको रीडर है वो डस्टबिन में फेंक देगा, दफा करो ये फजूल चीज है. जिस तरह हम अक्सर कंप्यूटर के ऊपर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे जाते हैं तो पहली लाइन शायद थोड़ी सी देखते थे and then we go down and accept and then our system hangs. There are several ways of starting a sales letter. Let us look at some of them. There are several ways of starting a sales letter. Let us look at some of them. Number one, making a striking statement. For example, number one, if you are above 40, read the enclosed literature. अगर आप 40 से ऊपर हैं तो जो लोग 40 से ऊपर होंगे वो जरूर देखेंगे क्योंकि 40 से ऊपर लोगों की मखसूस किस्म की डिमांड्स हो सकती है और एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं. If there are men, they have specific kinds of requirements and desires and expectations and they will tend to read. For example, after 40, men often become naughty. Naughty 40 भी कहा जाता है उसको. And after 40 is a formal beginning of dysfunction of various body parts. ये अक्सर हुआ करता है उन सोसाइटीज में जहाँ पे एक्सरसाइज का रिवाज नहीं है, तो हमारी सोसाइटी में भी चाहे तो ऐसी सूरत में हेल्थ सर्विस या हेल्थ से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो काफी सेल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर लॉस, ओबेसिटी, indigestion, and plenty of other things that can come, joints problem and other stuff. Number two, for the last 5 years, we have been working to produce the model you want. हम 5 सालों से कोशिश कर रहे हैं वो मॉडल लाने की जो आज जिसकी आप तो कर रहे हैं. तो हम देखते हैं कि भाई फिर पढ़ने वाला सोचेगा कि 5 साल क्या ये करते रहे, तो लोग फिर उसको पढ़ेंगे. You would like to share a secret with you and advise you to share it only with your wife. ये बड़ी कैचिंग स्टेटमेंट है. एक सीक्रेट है जो कि हमने अपनी सिर्फ वाइफ के साथ शेयर करना है. So then men will be very interested. Number 4, to suit your budget, we have specially devised a new saving scheme. Give us your precious 5 minutes in going through the enclosed literature. कि हमने to suit your budget, we have specially devised a new saving scheme. हमने आपके लिए एक मखसूस saving scheme शुरू की है. तो give us your precious 5 minutes. आपकी क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे जुबली इंश्योरेंस वालों का फोन आ रहा और वो मुझे बिल्कुल यही ऑफर कर रहे थे कि हमने आपके लिए एक ऐसी सेविंग स्कीम शुरू की है कि जो आपकी जिंदगी बदल देगी और आप हमें टाइम दें, हम आपके ऑफिस आएंगे और हम आपको एक प्लान बना के देंगे एंड यू विल बी सर्व्ड विद दैट. You will invest in our insurance and you will benefit it more than us. कुछ इस तरह की ऑफर. तो इमीडिएटली आप लफाजी में फंस जाते हैं और आप कहते हैं वाह भाई पता नहीं क्या ये मेरा अल्लाह ताला ने को मेरे लिए कोई मैसेंजर भेजा है या रेस्क्यूअर भेजा है जो मेरे लिए हेल्प के लिए आया दुनिया में. तो गिफ्ट ऑफ द गैप जिसको कहते हैं अपने अल्फाज के जरिए दूसरे इंसान को घेर लेना. तो सर्कुलर लेटर्स या सेल्स लेटर जो है उनमें भी यही स्किल हुआ करती कि दे शुड अट्रैक्ट अटेंशन of the reader and the potential buyer. Ultimately, buying and selling बड़ी हद तक एक psychological warfare भी है. So you should actually play upon the psyche of the buyer और उसके लिए आपको पूरी एफर्ट करनी चाहिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट का सहारा लें, प्रोपेगेंडा लें, कोई सहारा, लेकिन अपनी चीज बेचें. You need not feel nervous when asked to make a speech. और ये एक चीज क्या स्पीच अक्सर लोग स्पीच में कॉन्फिडेंट नहीं होते. For them, this might be a very good incentive. जैसा आइल्स की ट्रेनिंग के इदारे हैं तो वो कहते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, अब आपको कभी स्टेज फ्राइट नहीं होगा और आप अंग्रेजी बोलते हुए झिझकेंगे नहीं और आपकी जान नहीं निकलेगी, आपको पसीना नहीं आएगा. तो people often pay hefty fee over there and have 2-3 weeks training over there or maybe 1 month's training, and ultimately those who sell those services, their purpose is fulfilled and money is actually snatched from the potential buyer's pockets. You need not feel nervous when asked to make a speech. And number 6, you can't get the dancer on our TV screen, but you can't get the dancer on our TV screen, but you can
can get a lot of excitement. हमारी टीवी स्क्रीन पे डांसर नहीं नजर आएंगे लेकिन और बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी. तो आप एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो डांस से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगी जो ये पेश कर रहे हैं. तो यू टेंड टू buy that thing. इसी तरह आप अच्छी एडवर्टाइजमेंट के जरिए और अच्छी पैकेजिंग के जरिए और अच्छे एडवर्टाइजमेंट और एग्जीबिशन के जरिए कोई भी प्रोडक्ट शुरू में सेल कर सकते हैं और वो सेल हो जाती है. लोग अक्सर इन चीजों के हाथों बिक जाते हैं. Now, making a striking statement, then stating a significant fact. Then comes the second part. There are several ways of starting a sales letter. Let us look at some of them. Number one, making a striking statement. Number two, stating a significant fact. पहला एक striking statement होनी है शुरू में और उसके बाद दूसरा stating a significant fact. एक बहुत important fact जो आपने देना है वो next देना है. Our new device helps you save 25% of your fuel consumption. ये नई device जो है इससे आपका fuel consumption 25% कम हो जाएगा. तो आप कहेंगे वाह यार ये तो बहुत बड़ी बचत है. 25% का मतलब ये कि जहां पहले मैं 100 दे रहा था अब मुझे 75 देने पड़े. तो ये एक बड़ी बचत है. Our home duty courses will show you how to earn an extra 50 rupees per each week. And number three, you can save your costly equipment from the captors of voltage. Our control voltage and anything between 180 to 260 volts but runs out only 230 volts. यानी 180 से लेके 260 वोल्ट तक वो इनपुट लेता है आउटपुट देता है 230 वोल्ट्स की. You can beat cold by keeping your temperature 80 degrees. बाहर सर्दी होगी लेकिन अंदर आप टेम्परेचर 80 डिग्री रखेंगे. ये कोई यकीनी तौर पे हीटिंग सिस्टम होगा. You need not worry about your daughter's marriage. Just give us rupees 50,000 today and 100 years later we can return 500,000 rupees 500,000 with thanks. तो ये भी इंश्योरेंस वालों की तरह का है कि आज जिस चीज की वैल्यू अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 20 years on we shall give you 500,000. तो ये मनी उतनी ही डेप्रिशिएट भी हो जाती है. तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एन अट्रैक्टिव ऑफर. इट मे साउंड वेरी अट्रैक्टिव नाउ लेकिन लफाजी के जरिए आपको घेर लिया गया इस तरह. देन स्टेट रिलेटिंग एन एनेक्डोट, अ जोक और स्टोरी. एंड देन कम अगर आप कुछ स्टोरी से स्टार्ट कर लें, कोई कहानी सुनाई है, जोक डाल दें, that might also serve well. I won't read any of those jokes. I moved down there to making special offers. Both the budget and summer are around the corner. Beat them by owning our new Princess fridge at rupees 1,000 or less. This offer is open only up to 28th of February. तो ये summer आ रहा है, हम आपको Princess fridge at rupees 1,000 में दे रहे हैं. ये पता नहीं किस दौर की फ्रिज होगी जो 1,000 रुपए में मिलती है. Both the budget and summer are around the corner. यानी समर भी आ रहा है, बजट भी नया अनाउंस होने वाला है. Beat them by owning our new Princess fridge at rupees 1,000 or less. At rupees 1,000 less. Sorry, ये ऑफर है कि 1,000 रुपया बचत के साथ आप फ्रिज खरीद सकते हैं. This offer is open only up to 28th of February. जब आप ऑफर लगा देते हैं तो बाहर लपका हुआ चला आता है कि यार बाद में महंगी हो जाएंगी चीजें. जिस तरह खवातीन सेल के दिनों में टूट के पड़ती हैं कपड़ों वाली शॉप्स के ऊपर और आप देख सकते हैं कि जो हालात होते हैं. बेसिकली कंज्यूमर साइकी को ध्यान में रखते हुए सेल ऑफर लगाई जाती है. और मर्द भी इसी तरह अगर TCL एंड्रॉयड टीवी के ऊपर सेल लगी हुई है तो वो जाके मेट्रो भी पहुंच जाएंगे और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पहुंच जाएंगे और फटाफट खरीद के ले आएंगे कि भाई बाद में ये 2,500 रुपए महंगा हो जाएगा तो लेट्स बाय इट नाउ. लेकिन इस पे सेलर जो है अपना प्रॉफिट बहुत कमाता है बिकॉज सेल ज्यादा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कमेंसुरेटली बढ़ता है क्योंकि ज्यादा बिकेगी ज्यादा प्रॉफिट आएगा कंसिडरेटली. और अगर ज्यादा कीमत होगी सेल कम होगी और उसी रेट के साथ प्रॉफिट भी कम हुआ करेगा. When you retire, you can face the future confidently with a fortune of rupees 600,000 by setting aside just rupees 5 a day. अगर आप डेली के 5 रुपए जमा करते जाएं तो when you retire you can face the future confidently with a fortune of around 600,000 by setting aside just rupees 5 a day. 5 रुपए आप कटवाते जाए तो रिटायरमेंट के टाइम आपके पास 600,000 जो है वो ग्रेजुएटी की सूरत में या पेंशन की सूरत में पेंशन फंड की सूरत में मिलता है.
We offer absolutely free with every copy of our new dictionary, a calendar and a copy of quotable quotes. हर कैलेंडर के साथ ये चीजें हम देते हैं. तो ये ऑफर्स हैं जो दी जाती हैं ताकि कंज्यूमर की जो टेम्पटेशन वाली जो साइड है उसके ऊपर प्ले किया जाए. इंसान बेसिकली मुनाफे का तो शौकीन होता है, तो जब आप उसके अंदर इस तरह की कोई ऑफर लगा देते हैं तो इंसान फौरन लपकता है कि यार फायदा हो जाएगा. Number 4, good friends are rare indeed and so are good books, but there are a host of them. If you buy 5 from list A, we shall give you 2 from list B as gift. तो जब आप 5 लेंगे तो लिस्ट बी में से हम आपको 2 गिफ्ट के तौर पर भी देंगे. तो 5 लेने में ऑफर लगा दी जाती है, तो जितनी ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा बिकेंगी भी. उसके साथ साथ वो उन्होंने एक इंसेंटिव रखा है. Page 145. Focusing the central selling point. Then comes the central selling points. Silent, spacious, a built-in voltage stabilizer, and an extra strong motor. These and many more new features make our latest model of the Conquest fridge a world class. We invite you to read the enclosed folder which answers all the questions you may have in mind. जिस तरह होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, तो जब कोई चीज आती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो ये उसका सेंट्रल सेलिंग पॉइंट होता है कि इस चीज में वो चीज है, वो मशीनरी लगी है जो कि पहले आने वाली किसी चीज में नहीं मौजूद है. तो दिस इज अल्ट्रा एफिशिएंट. जिस तरह माजी में ऑटोमेटिक कार्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर द अराइवल ऑफ ऑटोमेटिक कार्स एक रेवोल्यूशन आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, एंड इट हैज बिकम अ मच मोर इजियर exercise to drive vehicles on the road. So ये central selling point हो गया, and that's why they are still expensive, more expensive than the manual cars. Number 2, even if you are a family of 8, cooking can be fun. Our jumbo size pressure cooker, ये हम last time कर चुके थे, देख सकते. If you want a comfortable home, please let us know. Right from the buying of a plot to the housewarming ceremony, we shall be with you. You do not have to take the trouble of contacting army of officers for legal formalities and a number of firms for construction materials. Creating homes is our business. यानी एक building contractors हैं जो कह रहे हैं कि प्लॉट लेने से लेके बनाने तक और आपको उसके अंदर पैक करने तक हम आपको असिस्ट करेंगे, लेकिन ये सर्विसेज हैं, ये मुफ्त नहीं होंगी. इसके लिए एक पैसा चार्ज किया जाएगा, और that's why they need this kind of literature as well. You give us the responsibility and we shall give you a house. आप हम पे एतमाद करें, हम आपको घर लेके देंगे जहाँ पे आप रहेंगे. Making a special appeal to the pride of possession, vanity, etc. And एक और चीज, जब आप कोई चीज किसी को बेचते हैं तो you own a prestige as well. A person having Samsung phones, or let's say Apple phones, smartphones, considers himself vain and better than many others because there's a special prestige associated with certain brands. आपने for example अगर लॉरेंसपुर का कपड़ा पहना हुआ है तो आप अपने आप को डिस्टिंग्विश समझेंगे कि मैंने वो ब्रांड पहना हुआ है जो मोस्ट एक्सपेंसिव है और मोस्ट प्रिविलेज्ड क्लास जो हमारी सोसाइटी की वो पहनती है. इसी तरह having a good office, personal space, having a good vehicle, and having a good high class phone are some of the things, and good dress on your body. These are the things that actually give you a sense of vanity, pride, snobbishness, one, and sense of pride in having a possession, ownership जिसको कहते हैं, sense of home and ownership. तो ये चीजें भी आपको आती है. तो when a seller is selling something, and if that brand is big and prestigious, in their sale letter or circular letters, they also inscribe those things which are associated with sense of pride in possession and vanity. By any means, these things are not good. Sense of pride in possession and sense of vanity in possessing certain things. If you judge those things according to morality, they are certainly not good.
but business world does not work on the principles of morality and ethics and simplicity as such. This is a world of commodities, buying, selling, possessing, and keeping the capital in rotation or in circulation, so to say. That's why sense of pride in possessing newer brands or latest technology items is something that is always celebrated. Number one, let Regal steal Almira. They own your home and become the talk of your neighborhood. कि भाई रीगल स्टील एलमीरा जो है जो बेस्ट ब्रांड है ये हम आपके घर में रखना चाहते हैं, आपके घर में होना चाहिए ताकि आपके नेबर्स उसको देख के बातें करें कि वो यार रीगल स्टील वालों की इनके घर में अलमारी है, कमाल ब्रांड है. So this class will conclude in 10 minutes. Let's see how far we go. Number 2, we drafted this letter for young and smart ladies like 7:16 yeah, right. So we drafted this letter for young and smart ladies like you who wish to preserve the freshness and brightness of their delicate skin. तो ये ख़वातीन को भी सेलिब्रेट को भी इस चीज की तरफ राग़िब किया जाएगा ताकि उनकी स्किन fresh or bright लगे. तो why would women not want their skins fresh and delicate and bright, and they will certainly be attracted to buy a cosmetic that actually enhances these things. Number 3, we still manufacture the perfume which the queens of your preferred. जो दूर दराज की जो मलकाएं हैं वो भी प्रेफर करती हैं, तो हम वो वाले परफ्यूम बनाते हैं. स्पेशली फ्रांस के परफ्यूम्स जो हैं वो फेमस हैं इनका. The uses of multi superfine constitute the users of multi superfine constitute a small group of ladies who love to be admired for their taste. मल्टी सुपरफाइन के जो यूजर्स हैं वो एक छोटा सा तबका है ख़वातीन का, और वो ख़वातीन हैं जो अपने टेस्ट की वजह से पहचानी जाती है कि उनकी चॉइस दुनिया की बेस्ट चॉइसेस में से एक है, तो वो ही वाले ब्रांड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आवर फॉर्मर foreign minister Hina Rabbani Kar was known to possess the best brands, and she used to be in the spotlight for possessing those expensive brands. So is the daughter of former Prime Minister Nawaz Sharif, Her Excellency Miss Nawaz, Maryam Nawaz. She is also known to wear clothing that are high class. So इसलिए Lady Diana used to be of good taste as well, and so is Ivanka Trump, Donald Trump's daughter, and many other figures. And the French Prime Minister Macron, he is also known to invest a lot on his wearings and on his makeup as well. तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि अपने टेस्ट के लिए काम करते हैं. They want to be known as people who possess. इसी तरह Faisal Wauda is also known to be very brand conscious in current Pakistani political scene. Asking a question, do you want to spend your money and have it too? Asking a question. आखिर में एक ऐसा attractive question डाल दिया जाए कि पढ़ने वाला सोच में डूब जाए कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की क्वेश्चन है कि डू यू वांट टू स्पेंड योर मनी एंड हैव इट टू, कि आपको खर्च करने के बाद ये ना फील हो कि आपकी जेब से पैसे चले गए, बल्कि आप कहें कि भाई मैं नफे में रहा. जिस तरह कोई प्लॉट खरीदता है और बाद में उसको अपनी इन्वेस्टमेंट भूल जाए, वो कहे कि मैं नफे में रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी जगह पे लिया है और मैं सुखी रहूंगा हमेशा यहाँ पे. और कोई व्हीकल लिया और उसके बाद उसको अपने पैसों की फिक्र ना और वो कहे कि मैंने बहुत अच्छी डील की है. तो that's also one of the ways to attract attention of potential buyers. Are you nervous when asked to make a speech? Do you throw away your pen when the ink is exhausted? Are you able to cook your breakfast in time? Why does your baby cry at night? तो ये सारी चीजें कि बच्चा क्यों रोता है, तो माँ तो फौरन लगेगी हाँ भी मेरा बच्चा तो 3 बजे तक सोता ही नहीं, तो की कोई चूसनी बना ली तुसी या कोई क्राइफोर्ट का ऐसा ब्रांड ले आए हो कि उससे मेरा बच्चा रात को
time पे सो जाए. So these are the things that these are the ways to buy to attract a large section of population who can be consumers of your good. The body. तो ये शुरू की statements थी. Number 2, introduction के बाद body में क्या आएगा? After you have arrested the reader's attention and aroused his interest, you should go on to explain the qualities of your product and its special features and to convince him that your claims are true. Number 1, to explain the qualities of the product and its special features, and number 2, to convince him that your claims are true. कि आप झूठ नहीं बोल रहे. आप जो चीजें लिख रहे हैं वो चीजें मौजूद हैं आपके आइटम के अंदर. This two-fold function is performed by the body of the letter. Your aim should be to introduce in the prospective buyer an overwhelming desire to buy what you are selling. If you know thoroughly the virtues and faults of your product, you will be able to highlight the selling points and tell the reader how it meets his requirement. In explaining, give only the main points. Tell him how it works, how it is made, and the effects it produces or the facilities it offers. If your product is a consumer article, make your appeal on an emotional or psychological plane. अगर आपका item consumer item है, for example, आपने कोई जूस निकालने वाली मशीन निकाली है, तो आपको potential buyers आपके बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि it's a thing that is actually consumed by majority population. So you should be using emotional and psychological appeals. If you are selling services, machinery or a piece of equipment, appeal to his knowledge. मशीनरी है और कोई स्पेशलाइज्ड आइटम्स है, फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी मशीन है, तो उसके लिए आपको appeal to his knowledge, requirements and needs. क्योंकि फोटोकॉपी मशीन्स को आप इमोशनल अपील से नहीं सेल करेंगे क्योंकि फोटोकॉपियर को उसकी खूबियों और खामियों का पता है. कुछ फोटोकॉपियर कहेगा कि भाई पिछली मशीन जो मेरी थी वो खराब हुई है, वो इसलिए खराब हुई है क्योंकि वो गर्म बहुत जल्दी हो जाती थी. कोई कहेगा कि वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती थी. कोई कहेगा उसकी इंक जो थी वो जल्दी खत्म हो जाती थी, और कुछ कहेगा वो स्लो थी बहुत ज्यादा, और कोई कहेगा कि उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी. So these are the things that actually basically count. The next step is to कोई कह सकता है कि वो कंप्यूटराइज नहीं थी, वो मैनुअल थी थ्रू आउट, तो कंप्यूटराइज होनी चाहिए ताकि हम वायरलेस के साथ कनेक्ट करें और हम कंप्यूटर से भी कमांड दे के इससे फोटोकॉपी ले सकें. The next step is to substantiate your claims and statements by facts, logic or reliable testimony. The buyer wants everything proved to him. There are several effective ways of doing so. Choose the one that suits your product best. Sometimes in one sales letter, several of these may be used. A few examples such as devices are given below. आप इसके नीचे देख सकते हैं कि order this body shaper at our risk and expense. Try it for 15 days, and if you do not see any improvement in your figure, return it. This offer is absolutely free, and there is no obligation on your part to buy. Guarantee. Every component has been thoroughly tested by our quality control department, but this is not all. We guarantee it against manufacturing defects for 5 years. If anything goes wrong during this period, we shall repair or replace it as need be entirely at our cost. So you do not risk anything when you choose a Bahar grinder. These samples, testimonials by users, test results, statistics, and closing additional literature. Statistics में क्या शामिल है जी? We have thoroughly tested Voltron input variations ranging from 180 to 60 volts fed in quick succession. 10,000 times reveal a deviation of 0.50% from the promised output of 230 volts. Statistics are duplication machinery turns out machines turn out copies 1.5 times faster than the best available in the market and produce 25% less noise. यानी हमारी स्पीड जो है उसकी ज्यादा, रेट ऑफ कॉपिंग जो ज्यादा तेज है. जैसा प्रिंटर के सामने कभी कभार टाइम इतना लग जाता है कि बंदा कहता है यार गलती की मैंने कमांड दे के, लेकिन कुछ कंप्यूटर जो लेजर कंप्यूटर्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो फटा 1 मिनट के अंदर सारा आर्टिकल आपको प्रिंट करके दे देंगे. So these are the things that actually count. Concluding paragraph में क्या देखना है आपने? Even if the first 2 parts of the letter are good, they will not be able to cleanse the issue unless your closing paragraph is able to motivate action. If your letter has made several points, it is better to recapitulate them before making the final appeal.
On it will depend whether your letter is able to convert the reader into a customer for introducing immediate action. Some of the inducing feature devices used are limited time or limited quantity offer, special bargain offers, offer, convenience in ordering, etc. A few examples are given below. उसमें offer देंगे आप कि भाई जल्दी करें, खरीद लें इसको, आप action के लिए induce करेंगे. In 1 minute this class will conclude, so you should go through the rest on your own. Conclusions to be avoided, या आपने पढ़ना है कि क्या चीजें avoid करनी है इसके अंदर. And then exhibit 1.1, 1.11.2, exhibit 11.3. So there are various examples. There comes circular letters. This we'll be doing tomorrow, right?